Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 11th of March. The session will be quite interesting and important. In this video students, we will be talking about a Semi-Connect Conference 2025 and the 19th edition of IASA Vision Summit that was held in Gandhinagar, Gujarat. Then we will be talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and Gujarat. Then Madhav National Park in Madhya Pradesh became India's 58th tiger reserve. Next is first year fuselage for LCA Mark 1A handed over to Hindustan Aeronautic Limited by Indian private industry, and many other news in this video will be discussed students. So apart from this students, we upload the daily current affairs video at 5 am in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs and topic wise are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, do subscribe to us if you are new to our channel, and also share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application student by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. Recently, Bhupendra Patel, who is the Chief Minister of Gujarat State, right, has recently inaugurated the Gujarat Semicon Connect Conference 2025. I repeat, Gujarat Semi-Connect Conference 2025. This was the first thing, right? Second is the 19th edition of IASA Vision Summit in Gandhinagar, Gujarat, right? So let's move to first thing, that is your Gujarat Semicon Semi-Connect Conference, right? This was a 3-day long event. It was held from 5th to 7th of March. And it was held where? It was held at the Mahatma Mandir Convention and Exhibition Center, that is in Gandhinagar, Gujarat. Correct. This conference featured 3 primary and parallel events, that is your building local to vocal value chain. Then next is your 19th edition of IESA Vision Summit and the second India Semiconductor Packaging Ecosystem Conference. And we just saw this IESA, that is your Indian Electronics and Semiconductor Association Vision Summit, and this was also recently inaugurated by whom? It was inaugurated by Bhupendra Bhai Patel. Correct. So coming back, Chief Minister of Gujarat Bhupendra Bhai Patel inaugurated these 2 things. So take a note of this, right? This is not 2 things actually, but IESA, that is India Electronics and Semiconductor Association Vision Summit. This is a part of this Gujarat Semi-Connect Conference 2025, right? Now, as the name suggests, Semi-Connect Conference, the main focus here will be building a resilient India's semiconductor supply chain, right? We know and we have discussed this multiple times also, that Gujarat is considered as the manufacturing hub for semiconductor. So a proper ecosystem is being built in Gujarat around semiconductor, right? And this will enhance the funding in the particular sector. Apart from this, if we talk about Gujarat, who is the governor of Gujarat? Acharya Devvrat, right? And there is a zoological park there, that is Sardar Patel Zoological Park. Moving on. Next is Prime Minister Narendra Modi was on a visit to Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Gujarat on 7th and 8th of March. Take a note of this, right? During his visit, multiple events were held, right?
First thing is, during his visit, he laid the foundation stone for multiple projects for the Union Territory worth over 2580 crore rupees, right? Then he visited and inaugurated various programs that included healthcare sector, that included women empowerment, that included the rural areas development. Then here we saw the inauguration of Namo Hospital. Inauguration of Namo Hospital, right? Then apart from this, multiple other development projects in Silvassa will be coming up. Then he also distributed the appointment letters under Rozgar Mela, which provided the benefits under the scheme, that is Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, right? Then Swalanya Didi scheme, then Gir Adarsh Ajivika Yojana. So under these schemes, whatever the appointments letters has to be distributed was distributed by Prime Minister Narendra Modi under this Rozgar Mela, right? Then apart from this, when he visited Gujarat, during Gujarat he talked about, here let me show you first this is Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, and this is the all the things that we just discussed. Then second is visits to Gujarat. On his visit to Gujarat, he that was on 8th of March, right? As 8th of March is also known as your International Women's Day, right? During his visit here, Prime Minister Narendra Modi participated in the Lakpati Didi scheme, right? Apart from this, he also took part in the Surat food security saturation campaign that was launched by him, that was launched in Surat, Gujarat. Correct? Take a note of it. Next is Madhav National Park in Madhya Pradesh became the India's 58th Tiger Reserve. So take a note of this, students, which is the 58th Tiger Reserve of India. It is Madhav National Park, and it is located where? It is located in Madhya Pradesh, right? Another tiger reserves here are Bandhavgarh Tiger Reserve, Kanha Tiger Reserve, Panna Tiger Reserve, Sanjay Tiger Reserve, Satpura Tiger Reserve, Pench Tiger Reserve, Ratapani Tiger Reserve, Wildlife Sanctuary, and so on. Right? If we talk about Madhya Pradesh, can you tell me who is the Chief Minister of Madhya Pradesh, students? Mohan Yadav. Who is the Governor here? Mangubhai Patel. What is the capital here? The capital is Bhopal. Right? Next is first year fuselage for LCA Mark 1A handed over to Hindustan Aeronautics Limited by Indian private industry. So what is being produced here or handed over? It is the first rear fuselage for the light combat aircraft Mark 1A, right? Produced by the Indian private industry Bengaluru based Alpha Tokol Engineering Service Private Limited, and this was handed over to whom? After, as we saw, this was handed over to Hindustan Aeronautics Limited in the presence of our Defence Minister Rajnath Singh, right? And take a note of this. This will be very important as the aircraft is already in the manufacturing line, and here Hindustan Aeronautics Limited has already manufactured the 12 light combat aircraft Mark 1A, and in them these fuselage will be implemented. Next is international affairs, students. Sea Dragon 2025 naval exercise has commenced off from the Guam coast, right? Take a note of this. This is in the Western Pacific Ocean. This exercise will be held from 9th of March till 4th of March till 19th of March. Correct? Take a note of this. This is a high intensity anti-submarine warfare exercise hosted by USA's Navy's 7th Fleet and involves the Indian Navy, Japan Maritime Self-Defense Force, Royal Australian Air Force and Republic of Korea Navy. All these will be taking part in this exercise. This exercise, the first edition of this exercise began in 2019, right? And since 2019 it is held annually. Moving on. Next, also remember here from Indian Navy, P-8I aircraft will be taking part here. Moving on, ITB Berlin 2025 was held from 4th of March to 6th of March in Berlin, Germany. ITB, this is your International Tourism Berlin, right? This is one of the largest travel fairs. It was held from 4th to 6th of March. It was held at the Berlin Expo City Center at the Berlin, Germany. There is a logo also, or we can say motto, or we can say the theme of this year's convention. It is the power of transition lives
here. In this convention, it attracted more than 24,000 visitors participating in 4 stages with a total of 17 themed tracks in 2027. Right, our Ministry of Tourism also participated at this ITB Berlin 2025. The ministry was leading a delegation of nearly 40 stakeholders from the Indian travel industry to showcase the vibrant cultural diversity of India. Moving on. Next, remember Patwa World Tourism and Aviation Leaders Summit, right? This was the 25th edition of it, right? That is the World Tourism and Aviation Leaders Summit held at ITP Berlin. This year's summit was hosted by PETWA in partnership with the Ministry of Tourism of Goa, right? And here the focus was to enhance tourism. Next thing, remember, if we talk about this Patwa International, during this summit, awards were also presented, and this year a total of 44 awards were presented across various categories such as best tourism destination, excellence in hospitality, aviation industry leaders, individual achievements, excellence in governance, and so on. And Goa made a significant mark at this event as it has won 2 international awards. That means they are working on tourism and promoting tourism efficiently. Next is Glass Ceiling Index 2025 was recently released, and it is about the top 10 best countries for working women in 2025, right? So this is the index, that is your Glass Ceiling Index. This index is talking about basically the women empowerment, right? This index was released by London, UK based Economist Group, a media company. They have released this Glass Ceiling Index. It was released on 8th of March, and as we discussed earlier, 8th of March is your International Women's Day. To celebrate this day, this Glass Ceiling Index was released, and as per this index, this country that is securing the first position here is Sweden, followed by Iceland, right? And now Iceland has witnessed dropped in this ranking by 1 place, that is now they are in the 2nd position, right? Very important. Then this one more thing here, remember students, this index is basically, as I mentioned, is talking about women empowerment and also the working conditions for the women across various countries in the OECD group, right? OECD, what is it? It is Organization for Economic Cooperation and Development, headquartered in Paris, France. Moving on, here you can see Sweden first, Iceland, Finland, Norway, and Portugal. Next is Indian Navy's first training squadron has completed the Thailand visit. So right, so this is Indian Navy's F1TS, that is first training squadron, consisting of INS Sujata, INS Shardul, ICGS Veera. They have successfully conducted their visit to Phuket deep sea port in Thailand, and it is a training exercise, right? Next, WMO, that is World Meteorological Organization, they have launched the iClimate Action Project that will boost the global climate intelligence. See, with the help of data, in today's generation, with the help of data using AI and machine learning, we are able to anticipate, or we can able to predict what can be the outcome of certain events, right? It basically provides us better analysis. Data scientists, who are these are using these data, right, and giving the meaningful output, right? So recently, World Meteorological Organization, they have collaborated with this global climate observing system, right? This is a group on earth observation and European Commission, correct? Basically what they are doing is they are talking about that how can we increase these better outputs, better results, so that we can predict or make a more better prediction for the environment, right? How can we make sure that we are using green energy? How can we make sure that the work organizations that are making our products, or that the manufacturing industries, they are focusing on these pollutants? Next students, next we are talking about economy and business. CIL, that is Coal India Limited, they have signed a memorandum of understanding with IIT Hyderabad to establish CleanZ in Telangana, right? This will be CleanZ, what it is? It is a center of clean coal energy and net zero in Hyderabad, correct? So it is Coal India Limited, that is Kolkata, West Bengal based. They have signed this MOU with IIT Hyderabad, right? Also one more thing, remember here, this initiative will develop clean coal technologies, and it will help us to diversify the coal consumption, right? Next is awards and recognition. Brand Finance Insurance 100 report was released for 2025 recently, and LIC has ranked 3rd among the world's strongest insurance brand, right?
Brand Finance, right? They have Brand Finance 100 report has been released. This is a report basically that is listing the top 100 insurance companies, right? The most valuable insurance brand, correct? And if we talk about this, LIC ranks third among the world's strongest insurance brand. Let's us see this, right? Here you can see Brand Finance Insurance 100 and LIC Mumbai Maharashtra based has been ranked third among the world's strongest insurance brand, achieving a brand strength index score of 88 out of 100, right? In overall terms brand value, LIC holds 12th position globally among the most valuable insurance brand, right? In strongest, LIC is at the third. In most valuable, LIC is at the 12th position, right? Here you can see the top 5 strongest insurance brand: PZU of Poland, then China Life Insurance of China, third LIC India, fourth NRMA of Insurance of Australia, and Unipolsai of Italy on 5th, and so on. Moving on to appointments and resignations, students. Honda Motor Company has recently appointed Takashi Nakajima as their new president and chief executive officer of HCIL. What is HCIL? Honda Cars India Limited, and this will be coming into effect from 1st of April 2025. He will be succeeding whom? That is Takashi Nakajima will be succeeding Takuya Sumura, right? Take a note of it. Next is sports. Indian Grandmaster Arvind Chidambaram has won the Prague Chess Masters 2025. As you can see him in the picture here, right? Indian Grandmaster. He has recently won the Masters section. He has won the Masters section of the Prague International Chess Festival. Location where was this held? It was held in Prague, Czech Republic. He secured the title with a score of 6 points, right? And after this win, his ELO rating increased by 5 points, right? And now he is the world's number 14 live ranking player, right? Next is India has clinched 2025 Asian Women's Kabaddi Championship title for the 5th time by defeating Iran in the finals, right? So Indian Women's Kabaddi team, as you can see it in the picture here, they have won the 6th edition of the Asian Women's Kabaddi Championship, and they have defeated whom in the finals? They defeated Iran's women team in the Kabaddi finals by 30-25, right? And India has also won the Champions Trophy, right? It is related to which sport? Cricket. Indian men's team has won the Champions Trophy, right? Also remember here in the women's Kabaddi team, Indian team is led by Captain Sonali Singate as the defending champion. Right, here you can see gold by India, silver by Tehran as we defeated Iran, silver Iran as we defeated Iran in the finals, then bronze won by Bangladesh and Nepal. Next is Obituary. Renowned classical singer Garimella Balakrishna has passed away. In 1948, he was born in Andhra Pradesh, and he was awarded the prestigious Sangeet Natak Academy Award in 2020 for his contribution to the Indian classical music. Next is International Women's Day. We have discussed this multiple times. It is observed on 8th of March to celebrate the social, economic, cultural and political achievements of the women. This year it was the 50 years of celebration by UN, right? And there is a theme here, students, for all women and girls, rights, equality and empowerment. This is the theme that I want you all to take a note of. Next is International Day of Women Judges, observed on 10th of March. This day is observed basically to create awareness about the judges who are women, right? The position of judges that are filled by the women, right? As it is signifying a gender equality, right? It is promoting gender equality. So to promote gender equality, this International Day of Women Judges is observed on 10th of March as it celebrates the role of women in the judiciary and to advocate for the gender equality. This year it was the 4th edition of this International Day of Women Judges. Next, CISF Raising Day, observed on 10th of March. CISF, that is your Central Industrial Security Force. This is observed on 10th of March and it is to celebrate the establishment of CISF in 1969. And it is to honor the commitment and sacrifices of the personals in protecting the critical infrastructure throughout the country. This year, it was the 56th edition of the CISF Raising Day that was observed on 10th of March. Next is state news, students. Karnataka's Chief Minister Siddaramaiah has presented 4.09 lakh crore rupees budget for FY
FY26, right? If we talk about this, right, this is 4.09 lakh crore rupees budget for FY26. This budget has increased 12% as compared to FY25, right? Here you will be seeing various welfare programs, agriculture, rural development budget will be coming into play, development oriented budget will be coming to play. Also here the government has allocated 51,034 crore rupees for the state government's 5 guarantee schemes, right? If we talk about Karnataka, who is the chief minister of Karnataka? Siddharamaiah, right? Who is the governor here? Thar Chand Gehlotji, and capital is Bengaluru. Next, students, next is Punjab government. They have launched project Hifazat to ensure women and child safety, right? In order to, right, basically one more thing, this was launched on International Women's Day only on 8th of March, right? And using this day to promote the safety of women and safety of child, and also to protect the women from the violence, this day was observed, or this initiative was launched by Punjab government, that is project Hifazat, right? Hifazat means safety. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. To which country Russia handed over the BRICS chairmanship in the final Sherpa and Su-Sherpa meetings of BRICS held in Russia in November 2024. So now we know that in year 2024 the BRICS presidency was with Russia. There was a Kazan declaration that was signed, and then Russia handed over this BRICS presidency to which country? To Brazil, and it is Rio de Janeiro, where you will be seeing the new or 2025 Brazil BRICS summit will be held. Next, in December, USA approved a $1.17 billion deal to supply the advanced communication systems, sensors and logistical support to enhance the Indian Navy's MH-60R multi-role helicopter. So, it is Sikorsky, right? I repeat, $1.17 billion deal is to supply the communication that will enhance the Indian Navy's Sikorsky MH-60R multi-role helicopter. Correct? And these USA made helicopters will be replacing the Sea King choppers, which served the Indian Navy for more than 3 decades. Decade is 10 years. Next, in December, UNESCO officially recognized the traditional Japanese sake making process as dash of humanity, honoring a brewing practice that spans over thousands of years. So this sake making process, what is this? This is a process that is similar to that of this sake is similar to that of an alcohol, right? So this sake making process, this is an intangible cultural heritage, right? It is a process, you cannot touch this process. Hence, it has a intangible cultural heritage, right? And this will honor the brewing practices that has been running over for more than thousands of years. Next, which country has recently launched the first ever national soundscape titled Anya on the occasion of 107th Independence Day? So this was launched by Finland, right? And as the first country in the world to introduce this national soundscape, Finland sets a new standard in cultural expression through music. This is a 1 hour long soundscape consists of 15 compositions. Next is Food and Agriculture Organization of United Nations. They have released the report titled The Global Status of Salt Affected Soils, which was launched during the International Soil and Water Forum in Bangkok, Thailand. According to the report, how much land in hectares is affected by salinity globally? So how much land? It is 1.4 billion hectares of land is affected by salinity globally, right? Salinity is when you have excess salt in the soil, because of which the growth of plant hinders, right? You will not be able to grow crops properly here, correct? So this data was released by Food and Agriculture Organization of UN. Next, which organization has recently released the global status report on drowning prevention 2024 in Geneva, Switzerland, that highlights a 38% drop in the global drowning deaths since the 2000s. It is World Health Organization, WHO. Next, which country has become the first European country to join the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, that is a key trade bloc in the Indo-Pacific region? It is UK, that is United Kingdom. And with this, UK became the 12th member of this CPTPP, right, as well as the first non-funding member to join this trade bloc. Next,
China has approved the construction of the world's largest hydropower dam on the Yarlung Zangbo River that flows into which river in India and Bangladesh? This world's largest hydropower dam, that is Yarlung Zangbo. This is the Brahmaputra river that flows in India and Bangladesh, and it is the world's largest hydropower dam. Question can be asked about the country that is making it. It is China. Next, which country will receive 2,371 million rupees from India for 33 development projects in education, healthcare and agriculture sector in December 2024? It is which country? It is Sri Lanka. Next, which country has recently signed a bipartisan bill that officially designates the bald eagle as their national bird? So it is United States of America, right? Which is the bald eagle, or bald eagle has been declared as their national bird. Now students, let's move to some government schemes. Which state government has recently launched the Bijli Sakhi Yojana to empower women in the tribal dominated district and support the electricity department in meter reading tasks in remote villages? It is Chhattisgarh, right? Chhattisgarh government, they have launched this Bijli Sakhi Yojana that will be empowering the women in the tribal dominated Jashpur district and will support the electricity department in meter reading tasks in remote villages. Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Vishnu Dio Sai, right? And here this pilot project will train the self-help groups to take the responsibility of meter reading in their areas. Next, which state has recently launched Mukhyamantri Paustik Alpahar Yojana, right? And this Paustik Alpahar Yojana was launched by Gujarat. Who is the Chief Minister of Gujarat? Bhupendra Singh Patel, right? This Mukhyamantri Paustik Alpahar Yojana, also known as the Chief Minister's Nutritious Snack Scheme, right? And this scheme will officially begin on 11th of December 2024, correct? And this scheme aims to fulfill the Prime Minister Narendra Modi's vision, Padhai Bhi Poshan Bhi, where nutritious food, and in that too nutritious breakfast will be provided to the school going students. Next, name the scheme that was inaugurated by Union Minister Manohar Lal Khattar in Krishna district of Andhra Pradesh to promote the use of energy efficient appliances while offering the economic benefits to individuals. It is Urja Veer scheme, right? This scheme implemented by Energy Efficiency Service Limited, and it is designed to promote the use of energy efficient appliances while offering economic benefit to the individuals. Next, under which scheme Ministry of Education has recently announced the material cost of pulses, vegetables and oil by 13.7%? It is Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman scheme. And as per the direction of the Ministry of Education, the material cost is increased from 5.45 rupees to 6.19 rupees for primary and Bal Vatika classes, and these enhanced rates will be applicable to all the states and union territories. Next, which state has recently launched Rajiv Gandhi Natural Farming Startup 2024? It was launched by Himachal Pradesh, right? This will be implemented they have launched this 6 new initiatives that will provide financial assistance to the people of, or the beneficiaries of, Himachal Pradesh, right? This is your Rajiv Gandhi Natural Farming Startup scheme. Next, which of the following are correct with respect to the credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipts based pledged financing by Union Minister Prahlad Joshi? If we look at the options here, option A and option C is right, B is wrong. B is saying that under the scheme, loan of up to 50 lakh rupees and 200 lakh, that is 2 crore rupees, will be provided for agriculture and non-agriculture purposes respectively. Is it correct? No. Under the scheme, loan up to 75 lakh rupees and 2 crore rupees will be provided, right? Now the option is right. Moving on. Next, in in December, Government of India sanctioned 4,388 crore rupees loan under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthan Maha Abhiyan scheme that will solarize the agriculture sector for the various states across India. Next, who has recently launched the Banglar Bari scheme to provide the houses for the rural poor across the West Bengal? So Mamata Banerjee, who is the Chief Minister of West Bengal, has launched this Banglar Bari scheme that will provide houses for the poor people or the rural people across West Bengal. Next, students, is our homework section. First, who has been recently appointed as the Chairman of the Bar Council of India? Second question, tell me recently who has been appointed as the Chief Operating Officer of
RBL Bank. Then third question, tell me who has been recently appointed as the Chief Executive Officer of Government E-Marketplace, that is GEM. Fourth question, recently who has been nominated for the Laurus World Comeback of the Year Award? He is a cricketer, name है. So these are your 4 homework questions, students. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा. आज हम बात करेंगे गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने कुछ इनॉग्रेट किया, कुछ कॉन्फ्रेंस एंड समिट को इनॉग्रेट किया गांधीनगर गुजरात में, उसको डिस्कस करेंगे. देन अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन टेरिटरीज के विजिट पे थे एंड स्टेट के विजिट पे थे, जैसे दमन एंड दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, गुजरात हो गया, इनकी विजिट पे थे. यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स भी इनके द्वारा लॉन्च किए गए. माधव नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश बिकेम द 58th टाइगर रिजर्व इन इंडिया. Then first year fuselage for LCA Mark 1A handed over to Hindustan Aeronautics Limited that will be used in this fighter jets. There are many more news apart from this that will be discussed in this video, students. So stay tuned till the end. Students, हम सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देते हैं. मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किए जाते हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके. ऑल्सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करना हमें अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स के साथ, एंड सभी को इस वीडियो को बारे में बताओ, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ, जो कि आपकी डेली लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. We have an application, student, by the name Careers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded it, you can log in it through your Gmail ID. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. In our course, you will be able to find the quizzes that are uploaded, which will help you enhance your learning. We make sure to cover multiple banking exams that will help you to land a better job. That includes your IBPS, RRB, SBI PO, and other banking related exams. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर से. तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट में विजिट करके आए हैं, राइट. उसी के अलावा एक जहाँ पे उन्होंने विजिट किया ना, वो है गुजरात. गुजरात में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट, कि गुजरात में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा 2 चीज़ों को इनॉग्रेट किया गया. एक तो है कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक समिट भी यहाँ पे इनॉग्रेट की गई. कॉन्फ्रेंस है गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 की. ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करने के लिए एंड एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई. इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, वनतारा में भी अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे, राइट, करेक्ट. वनतारा क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं बेसिकली. यहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको कंजर्व किया जाएगा. अनंत अंबानी के द्वारा इसको ओपन किया गया, ये भी गुजरात में है, राइट. तो गुजरात में कई सारी चीज़ें इन्होंने इनॉग्रेट की, राइट. एंड इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर वापस बात करें तो सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस किया जाएगा. और हम जानते हैं कि गुजरात को तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, राइट. इसी से देखेंगे अब कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पे फाइनेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी इन प्रोजेक्ट्स में. इसी के साथ साथ 19वें IESA विजन समिट इन गांधीनगर गुजरात को भी इनके द्वारा भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया. अब देखो, सबसे पहली चीज़ कि ये हुआ कहाँ पर? ये हुआ महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, जो कि गांधीनगर गुजरात 5 से 7 मार्च तक था. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है, फिर हमने अभी बात करी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 यूनियन टेरिटरी
एंड एक स्टेट की विजिट पे थे। स्टेट हमने देखी थी गुजरात, यूनियन टेरिटरी आ जाती है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स इनके द्वारा लॉन्च किए गए हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एंड मैनी मोर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में नमो हॉस्पिटल्स के इनॉग्रेशन किया गया। देन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2580 करोड़ के यहाँ पे रहेंगे एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रोजगार मेला वहाँ पे लगा और उसके दौरान अपॉइंटमेंट लेटर्स हैंड ओवर किए गए जो भी यहाँ पे अपॉइंटीज रहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के, गिर आदर्श आजीविका योजना के, सवल्यन दीदी स्कीम के, तो इनके यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको यहाँ पे उसके सर्टिफिकेट्स इशू किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बन गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के अलावा अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, सतपुरा, पेंच, रातापानी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये देखने को मिलते हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो कौन रहेंगे चीफ मिनिस्टर? मोहन यादव। मोहन यादव। गवर्नर कौन रहेंगे? मंगू भाई पटेल। एंड कैपिटल कौन सी रहेगी? भोपाल रहेगी। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट ईयर फ्यूसलेज फॉर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, राइट, ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं किन के द्वारा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। एंड इन एयरक्राफ्ट में ही ये रियर फ्यूसलेज को लगाया जाएगा। करेक्ट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सी कंपनी ये डिलीवर कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को? तो वो है अल्फा टोकॉल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। ये इनको ये डिलीवर कर रही है एंड राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ये हैंड ओवर किए गए। इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। सी ड्रैगन एक्सरसाइज की एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि गुआम कोस्ट में हमें देखने को मिली इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये 4 मार्च से लेके 19 मार्च तक एक्सरसाइज चलेगी एंड ये एक हाई इंटेंसिटी एंटी सबमरीन वॉरफेयर रहेगी। राइट, इसको यूएस नेवी के द्वारा होस्ट किया गया। यूएस नेवी की 7th फ्लीट के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 2019 में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी और उसके बाद हर साल हमें ये देखने को मिल रही है। इसके बाद आ जाते हैं ITB बर्लिन 2025 से हमें देखने को मिला। 4 मार्च से 6 मार्च तक बर्लिन जर्मनी में भी हुआ। ये ITB क्या है? इंटरनेशनल टूरिज्म बर्लिन। बेसिकली यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर फोकस करने का काम किया गया है इस इवेंट के दौरान। राइट, यहाँ पे क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर फोकस कर सकें। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आती है, किसी भी एरिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी एक मोटो रहेगा या हम थीम भी कह सकते हैं, ये है द पावर ऑफ ट्रांजिशन लाइव्स हेयर। राइट, एंड ये हुआ कहाँ पर था? बर्लिन एक्सपो सेंटर सिटी में हुआ था जो कि बर्लिन जर्मनी में है। इवन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे 40 स्टेक होल्डर्स के साथ इंडिया ने अपने वाइब्रेंट कल्चर डाइवर्सिटी को यहाँ पे शोकेस किया। अगर हम यहाँ कन्वेंशन की बात करें 24,000 से भी ज़्यादा विजिटर्स देखने को मिले इन 4 स्टेजेस एंड 17 थीम ट्रैक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसी के दौरान पटवा वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट भी हुई जिसका 25वां एडिशन हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गोवा के साथ यहाँ पे इस समिट को होस्ट किया गया था जहाँ पे टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जाएगा। इवन इसी के दौरान इसके अवार्ड्स भी दिए गए और अवार्ड्स में अगर हम देखें तो 44 अवार्ड्स दिए गए एंड गोवा स्टेट यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट स्टेट या सिग्निफिकेंट एरिया सामने निकल कर आया है जहाँ पे टूरिज्म के ऊपर अच्छा काम किया है एंड दे आर फ्लरिशिंग। मूविंग ऑन, ग्लास सीलिंग इंडेक्स की बात करें तो देखो अभी इंटरनेशनल वीमेंस डे हमने ऑब्जर्व किया कब? 8 मार्च को। राइट, तो इसके दौरान ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स को रिलीज किया गया जो बताता है कि वीमेंस की जो वर्किंग कंडीशन है किसी कंट्री में कितनी सेफ है, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राइट, इन सब चीज़ों को कंपाइल करके यहाँ पे ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज किया गया। ये रिलीज किया गया द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के द्वारा। राइट, लेट मी शो यू, लंदन यूके बेस्ड इकोनॉमिस्ट ग्रुप, इनके द्वारा ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स रिलीज किया गया इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेजन जो कि 8 मार्च को रिलीज किया गया। एंड स्वीडन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा। अगर हम देखें यहाँ पे स्वीडन फर्स्ट, सेकंड आइसलैंड, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ नॉर्वे एंड फिफ्थ पोर्चुगल। मूविंग ऑन, इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने कंप्लीट किया थाईलैंड का विजिट। ये अभी थाईलैंड में कहाँ पे? फुकेट डीप सी पोर्ट में विजिट पे गए थे यहाँ पे। एंड कौन सा ये स्क्वाड्रन, क्या क्या रहेगा स्क्वाड्रन में? INS सुजाता, INS शार्दुल, INS वीरा, इन सब का पार्टिसिपेशन यहाँ पे हमें देखने को मिला।
नेक्स्ट आ जाते हैं WMO, इन्होंने लॉन्च किया आई क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट को, ताकि ग्लोबल क्लाइमेट इंटेलिजेंस को बूस्ट दिया जा सके। WMO क्या है? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे अगर हमारे पास डाटा है ना, उस डाटा को अगर हम फीड करें AI में, मशीन लर्निंग में, राइट, उसका डाटा एनालिसिस करके उसका प्रॉपर हम अगर मीनिंगफुल आउटपुट निकाल सकें उसके एनालिसिस से, वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में क्लाइमेट को और बेटर कर सकें, राइट, उसको क्लीन कर सकें, उसको एक अच्छे से रहने वाली जगह बना सकें, राइट। तो इसके लिए हमें इंटेलिजेंट क्लाइमेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज का, इनोवेशंस का यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पे। CIL जो कि है कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने IIT हैदराबाद के साथ अभी एक MOU साइन किया टू एस्टेब्लिश क्लीन जेड इन तेलंगाना, राइट। ये क्लीन जेड क्या है? सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो हैदराबाद। हम जानते हैं कि अब हम क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। इंडिया में काफ़ी सारे में थर्मल प्लांट से हमारे पास अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आती है, तो कि एक प्रॉपर स्मूथ ट्रांजिशन हो सके, प्रॉपर क्लीन ट्रांजिशन हो सके, इसका ध्यान रखने की यहाँ पे काम किया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के द्वारा भी लिस्ट रिलीज की गई। 2 लिस्ट रिलीज की गई हैं, एक तो है वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, एक है वर्ल्ड की वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड। 2 चीज़ लिस्ट रिलीज की गई। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की, राइट, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड की बात करें तो यहाँ पे LIC इंडिया का 3rd पोजीशन पर आता है इंश्योरेंस कंपनीज में। अगर मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स की बात करें तो LIC 12वें पोजीशन पर आता है, ये याद रखेंगे, राइट। यहाँ पे आप स्ट्रॉन्गेस्ट देख सकते हैं PZU पोलैंड का, 2nd पे चाइना लाइफ इंश्योरेंस, चाइना का 3rd पे LIC, 4th पे NMRA इंश्योरेंस एंड 5th पे यूनिपोल, राइट। तो ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे स्टूडेंट्स। होंडा मोटर कंपनी ने भी अपॉइंट किया तकाशी नाकाजीमा को एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड। 1 अप्रैल 2025 से इनकी पोजीशन ये स्टार्ट हो जाएगी। किनको सक्सीड करेंगे? ये तकुया सुमुरा को यहाँ पे सक्सीड करेंगे। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने अभी प्राग चेस मास्टर 2025 को जीत लिया है, राइट। एंड इसमें भी ये इन्होंने क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से इवेंट में, राइट, इसमें तो प्राग चेस मास्टर में तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन से इवेंट्स में इन्होंने जीता, कौन से सेक्शन में इन्होंने जीता? तो मास्टर सेक्शन को इन्होंने यहाँ पे जीत लिया है, राइट। एंड अब ये वर्ल्ड के नंबर 14 पे आ जाते हैं एज द लाइव रैंकिंग्स में, अगर हम देखें ELO पॉइंट्स के हिसाब से। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल हुआ था, तो यहाँ पे इंडिया की वीमेंस कबड्डी टीम ने इसको जीत लिया है फॉर द 5th टाइम एंड इन्होंने ईरान को फाइनल में हराया। आप यहाँ पे इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम देख सकते हैं, इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया है, 5वीं बार जीता है, ईरान को इनको फाइनल में हराया। 2005 में, 7 में, 8 में एंड 17 में इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया था और अब 25 में इसको जीत लिया गया है। इंडियन टीम को लीड कौन कर रहे हैं? सोनाली सिंह घाटे एंड ये 6वां एडिशन था जिसमें से 5वीं बार तो इंडिया ने ही यहाँ पे इसको जीता। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड इंडिया का, सिल्वर ईरान का, ब्रॉन्ज बांग्लादेश एंड नेपाल का। नेक्स्ट ऑब्यूटरी पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। रिनॉन्ड क्लासिकल सिंगर गरिमेल्ला बालाकृष्णन, इनका रिसेंटली निधन हो गया इन आंध्र प्रदेश। 1948 में इनका जन्म हुआ था एंड इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल वीमेंस ने हमने डिस्कस ही किया था कि 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए एंड जो वीमेन की पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 50 साल पूरे हो गए हैं UN ने जब इस डे को डिक्लेयर किया था। इस बार की थीम याद रखेंगे, फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। वीमेंस का पार्टिसिपेशन जुडिशरी में, राइट, एंड लॉ में, ये इस डे को दर्शाता है कि बेसिकली कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी काम होता हुआ दिख रहा है एंड वीमेन अब जुडिशरी की तरफ, लॉ की तरफ भी बढ़ती हुई जा रही है। इसका हमने 4th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर CISF रेजिंग डे, 10 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ये डे ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि CISF रेजिंग डे या फिर CISF को, जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के कमेमोरेशन के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार 56वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। एक चीज़ बताओ, डायरेक्टर जनरल कौन है CISF के? राजविंदर सिंह भट्टी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। 1969 में एज वी डिस्कस्ड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ पे स्टूडेंट्स। अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी के द्वारा 4.09 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY26। यहाँ पे इनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए 51,034 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए
इसी के अलावा आप देखेंगे 6 डेवलपमेंट फील्ड्स में फोकस किया जाएगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स पर, बजट्स पर, एग्रीकल्चर पर, रूरल डेवलपमेंट पर, राइट, जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, एज वेल एज एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाएगा। गवर्नर कौन है? कर्नाटका के थारचंद गहलोत, कैपिटल बेंगलुरु। इसके बाद ध्यान रखेंगे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा अभी वीमेन सेफ्टी एंड चाइल्ड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल वीमेंस डे पे 8 मार्च को यहाँ पे प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया, जो फोकस करेगा वीमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्या है प्रोजेक्ट हिफाजत? किस स्टेट के द्वारा? पंजाब स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स यूनेस्को। यूनेस्को ने अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जापान की एक साके बियर होती है, या फिर बियर नहीं बोलेंगे हम इसको, एक अल्कोहलिक बेवरेज बोलेंगे, राइट। इस साके मेकिंग, इसकी साके इसका नाम हो गया, तो इसकी जो मेकिंग प्रोसेस होती है, राइट, उसको ऑनर करने के लिए उसको क्या रिकॉग्नाइज किया गया? उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। इंटेंजिबल वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉन्यूमेंट हो गया, राइट, या कोई हिस्टोरिकल प्लेस, आप वहाँ जाके उसे टच कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ प्रोसेसेस हो गई, जैसे प्रोसेस क्या है? द वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। फिर आपका फेस्टिवल्स हो गए, राइट। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, ये क्या होती है? ये आप फील करते हो, ये जो इनकी फेस्टिव वाइब्स होती हैं, तो इनको तो हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, राइट। तो ये साके मेकिंग प्रोसेस ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी लॉन्च किया फर्स्ट एवर नेशनल साउंडस्केप, जिसका टाइटल रहेगा आनिया ऑन द ओकेजन ऑफ द 107th इंडिपेंडेंस डे। तो किस कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई? ये है फिनलैंड के द्वारा, राइट। एंड ये 1 आवर लॉन्ग आपका साउंडस्केप रहेगा, जिसमें 15 से ज़्यादा कंपोजिशंस रहेंगे। नेक्स्ट, यूएन के आर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, द ग्लोबल स्टेटस ऑफ सॉल्टेड इफेक्टेड सॉइल्स। इसमें पूछा गया कि जो सॉइल्स हैं, राइट, अलग अलग जो मिट्टियां हैं, वहाँ पे आपने देखेंगे उसमें सेलिनिटी एक टर्म होता है। सेलिनिटी होता है जब आपकी सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। बहुत अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, राइट। जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है वो सेलाइन हो जाता है एंड उसमें चीज़ों को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, कितनी लैंड इन हेक्टेयर्स अफेक्टेड बाय सेलिनिटी ग्लोबली? तो कितनी लैंड है? वो है 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स लैंड रहेगी जो कि अफेक्टेड है बाय सेलिनिटी ग्लोबली। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन 2024 की इन जिनेवा स्विट्जरलैंड, जो हाईलाइट करता है 38% ड्रॉप इन द ग्लोबल ड्राउनिंग डेथ सिंस द 2000। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अभी वो, या कौन सी कंट्री वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई जिन्होंने CPTPP को ज्वाइन किया? CPTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये एक ट्रेड ब्लॉक है इंडो पैसिफिक रीजन का। तो किस कंट्री ने ऑफिशियली ज्वाइन किया एंड वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई? वो है यूनाइटेड किंगडम। एंड ये वो पहली कंट्री बनी है जो यहाँ पे नॉन फंडिंग कंट्री है जिन्होंने इनको ज्वाइन करा है। नेक्स्ट, चाइना ने अप्रूव किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम का कंस्ट्रक्शन यारलोंग ज़ेंगबो रिवर पर, जो कि इंडिया में एंड बांग्लादेश में फ्लो करती है। इंडिया में क्या नाम से जानते हैं उसको? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। बांग्लादेश में उसका क्या नाम हो जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ। गंगा रिवर का भी आप मुझे बताओ कि इंडिया में क्या नेम है गंगा रिवर का, चाइना में क्या नाम हो जाता है उसका, राइट। तो ये रहेगी वन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, हाइड्रो पावर डैम बना रहा है कौन? चाइना बना रहा है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसीव किया 2371 मिलियन रुपीज़ फ्रॉम इंडिया, ताकि 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो किस कंट्री ने रिसीव किया? श्रीलंका के द्वारा ये अमाउंट यहाँ पर रिसीव करा गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया एक बाय पार्टीशन बिल, जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेट करेगा बॉल्ड ईगल को एज देयर नेशनल बर्ड। तो बॉल्ड ईगल USA का नेशनल बर्ड बन गया। स्टूडेंट्स, ये तो हो गए इंटरनेशनल अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पर। पहला क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया बिजली सखी योजना, जो कि एम्पावर करेगा वीमेन को इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि उनको इलेक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट में मीटर रीडिंग की जॉब्स पर एम्प्लॉय किया जा सके, राइट। तो इससे क्या होगा? उनको वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि वो कैसे मीटर की रीडिंग ले सकती हैं अपने लोकल एरियाज़ में, एंड वहाँ पर उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। उनको 4 से 7 हज़ार रुपये तक के महीने अब वेतन के तौर पे यहाँ पे रखा जाएगा, राइट। तो कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? ये छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव रहेगा बिजली सखी योजना। स्पेशली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज़ में यहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जाएगा।
नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना, राइट, जो कि है चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशियस स्नैक स्कीम। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना? ये गुजरात स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड गुजरात स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं उनको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो मील से पूरी हो सके, राइट। एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है, पढ़ाई भी पोषण भी, उसके अंडर उसको फुलफिल करने के लिए। एंड 607 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए जाएंगे इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट, name the scheme that was recently inaugurated by Union Minister Manohar Lal Khattar in Krishna district of Andhra Pradesh to promote use of energy efficient appliances while offering economic benefits to individual। मतलब जो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस होंगे, जैसे एलईडी आप देखते हैं ये बहुत लाइट कंज्यूम करता है, देन सोलर कुकर्स आ गए हैं, राइट। तो ये क्या है, बहुत कम एनर्जी मतलब बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं ना, काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स के एग्जांपल नहीं है। तो ऐसी इक्विपमेंट्स को राइट लाने के लिए अभी कौन सी स्कीम है जिन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ हमारे पावर ने मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये लॉन्च की गई, करेक्ट, कहाँ पर? इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्कीम का नाम रहेगा ऊर्जा वीर स्कीम, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर विच स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया मटेरियल कॉस्ट ऑफ पल्सेस वेजिटेबल ऑयल बाय 13.7%। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मन योजना के अंडर इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड यहाँ पे वेजिटेबल एंड ऑयल्स का 13.7% जो कवर है अंडर द प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मन स्कीम को लाया गया। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च राजीव गांधी नेचुरल फार्मिंग स्टार्टअप स्कीम 2024। तो किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा, राइट। नेक्स्ट, which of the following are correct with respect to the credit guarantee scheme for electronic negotiable warehouse receipt based pledge financing by Union Minister Prahlad Joshi of Ministry of Consumer Affairs, Food Public Distribution and Ministry of New and Renewable Energy in December 2024, राइट। तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए इनमें से बताना कौन सा ठीक रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आपके सही हैं, बी गलत है। बी कह रहा है अंडर दिस स्कीम जो लोन्स है वो 50 लाख रुपए तक के एंड 2 करोड़ तक के मैक्सिमम प्रोवाइड कराए जाएंगे फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ये क्या सही है? नहीं, 50 नहीं, 75 लाख से 2 करोड़ तक के ये लोन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन दिसंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए 4,388 करोड़ रुपीस अंडर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम, ताकि सोलराइज किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर को अक्रॉस द स्टेट्स। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बंगलार बारी स्कीम टू प्रोवाइड हाउसेज फॉर द रूरल पीपल अक्रॉस वेस्ट बंगाल, राइट। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया बंगलार बारी स्कीम? तो वो है ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया, राइट, टू प्रोवाइड हाउसेज फॉर द रूरल पीपल अक्रॉस वेस्ट बंगाल। यहाँ पे 14,773 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंदर खर्च करने की बात की गई एंड 1.2 लाख हाउसेज यहाँ पे लोगों को देने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट ने रिसेंटली या विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द 5th स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% पाइप्ड वाटर सप्लाई टू रूरल हाउस होल्ड्स अंडर जल जीवन मिशन हर घर जल स्कीम? इट इज़ पंजाब स्टेट, राइट। एंड हेयर जो ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट रहेगा उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमवर्क सेक्शन पे। पहला है तीसरी बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती अभी, किसके बीच फाइनल हुआ था एंड ये कौन सा एडिशन है रणजी ट्रॉफी का, राइट, ये बताओ। सेकंड क्वेश्चन, अभी रिसेंटली किन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, नाम बताओ। थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड एनजीओ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी थीम थी एंड कौन सा एडिशन रहेगा। एंड चौथा क्वेश्चन, नेशनल सेफ्टी डे का कब ऑब्जर्व किया जाता है, एडिशन क्या है एंड क्या थीम रहेगी। ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से।